फीचर्स ऑफ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में सेल साइज इज एनलार्ज्ड, सेल का स्वेलिंग होता है। एपोप्टोसिस में सेल साइज इज रिड्यूस्ड, सेल का श्रिंकेज होता है। नेक्रोसिस में सेल साइज इज एनलार्ज्ड, सेल का स्वेलिंग होता है। एपोप्टोसिस में सेल साइज इज रिड्यूस्ड, सेल का श्रिंकेज होता है। न्यूक्लियस इन नेक्रोसिस: pycnosis, karyorrhexis, and karyolysis. Nucleus in apoptosis undergo fragmentation into nucleosome size fragments. Fragmentation into nucleosome size fragments. Plasma membrane is disrupted as in necrosis. It is intact with altered structure, especially the orientation of lipid in apoptosis. Plasma membrane disrupted in necrosis. It is intact with altered structure, especially the orientation of lipids. In apoptosis, plasma membrane is intact with altered structure, especially the orientation of lipid. Cellular contents: in necrosis, the cellular contents undergo enzymatic digestion and may leak out of the cell. In apoptosis, cellular contents are also intact. They may be released into the apoptotic bodies. Necrosis में cellular contents undergo enzymatic digestion. They may leak out of the cell. Apoptosis में the cellular contents are intact. They may be released into the apoptotic bodies. Adjacent inflammation frequent in necrosis, not in एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में एडजेसेंट इन्फ्लामेशन नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल: नेक्रोसिस इज यूजुअली पैथोलॉजिक, culmination of irreversible cell injury. Necrosis is usually pathologic, culmination of irreversible cell injury. Apoptosis is often physiological. It is the means of eliminating unwanted cells. May be pathological after some forms of cell injury, especially DNA damage. पहला बेसिस है सेल साइज। नेक्रोसिस में एनलार्ज्ड होता है, स्वेलिंग होता है। एपोप्टोसिस में श्रिंकेज होता है, सेल साइज छोटा हो जाता है। न्यूक्लियस का पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस। एपोप्टोसिस में अंडरगो फ्रैगमेंटेशन, दे फ्रैगमेंटेशन होता है इनटू द न्यूक्लियोसोम साइज फ्रेगमेंट्स. Plasma membrane disrupted in necrosis, intact in apoptosis. Plasma membrane is intact in apoptosis with altered structure, especially the orientation of lipids. Cellular contents undergo enzymatic digestion and may leak out of the cell in necrosis. Cellular contents are intact in apoptosis. They may be released into the apoptotic bodies. Adjacent inflammation is present in necrosis. Adjacent inflammation is frequent in necrosis. There is no adjacent inflammation in apoptosis. Okay. Last point: necrosis is usually pathological, culmination of the irreversible cell injury. It is a culmination of irreversible cell injury. Apoptosis is often physiological. It is for the elimination of unwanted cells. It may be pathological in case of cell injury, especially DNA damage.